some basics related to circle. Firstly, we will discuss what is a circle, then some minute concepts related to circles which are very important to understand while solving any problem related to the circle. So firstly, what is a circle? Suppose we have a fixed point. Let this point be C. Now we have a number of points which are equidistant from this fixed point C. हमारे पास एक पॉइंट है C और उसके बाद काफी सारे पॉइंट्स हैं like this which are equidistant from this point C. मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस C पॉइंट से सेम है. All these points are equidistant from this fixed point C. So if we join all these points, we say locus of all the points. Locus means combination, set of all the points which are equidistant from this fixed point. इन सारे के सारे points का अगर मैं एक set बना देता हूँ, I mean इनको मैं join कर देता हूँ, what do we get? We get a circle. This is a circle. Circle is the set of all those points which are equidistant from this fixed point. The fixed point is called center of the circle. मैं इस circle पे जितने भी points mark करूँगा, let it be A, then B, then D. All these points are equidistant from the circle, from the center of the circle. So this one is called a circle, locus of all the points which are equidistant from a fixed point. The fixed point here, fixed point C is called center of circle, and distance between center and the circle, in simple words we can say center of circle से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, this distance is called radius of circle. सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, this one is called a radius of the circle. Let it be CA. Here CA is a radius of the circle. Then if we double the radius, suppose we have another radius C से लेके center of circle से circle तक मैं एक और distance mark करता हूँ, let it be B. C to B, this distance is again called radius of the circle. Radius plus radius, अगर मैं radius को double कर लूँ, the whole distance is called diameter of the circle. This is called diameter of the circle. सर्कल के रेडियस को अगर मैं डबल करता हूँ, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल. वी कैन आल्सो से डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इफ दिस वन इज अ डायमीटर, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सपोज दिस वन इज वन पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मीन्स half circle, other circle. This part is again called semicircle. We can also say diameter of a circle divides it into two semicircles. Now suppose we make a complete round over the boundary of the circle. हम A से चलना स्टार्ट करते हैं, पूरा राउंड लगा के फिर से A पे आ जाते हैं. This distance is called circumference of the circle. Circumference means perimeter of the circle. Perimeter of the circle is called its circumference. Generally हम radius को R से denote कर देते हैं, whether small letter or capital letter. Diameter को हम D से denote कर देते हैं, and diameter of circle is 2 times its radius. We can say D is always equal to 2R. We can also say radius of circle is half of the diameter, or we can write it as रेडियस इक्वल्स टू डी बाई 2. डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा हमारे पास.
Then perimeter of the circle is called its circumference, and circumference of the circle is 2 pi r. This one is the formula for finding circumference of the circle. इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं, अगर pi into 2r, pi into 2r. 2r means 2 times radius, and 2 times radius is called diameter. So this formula can also be used for finding the circumference of the circle. Circumference of the circle 2 pi r भी लिख सकते हैं, pi d भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम रेडियस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या फिर साथ में हम डायमीटर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. देन this complete portion is called area of circle. Area of circle. Formula for finding area of circle is pi r square. We can say pi into square of the radius. Then we have some more concepts related to circle. इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ए पॉइंट को भी. Now this one is the center of circle. Let it be C. We draw a line segment. मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी. This line segment divides the circle into two parts. एक ये पार्ट बन रहा है, एक ये पार्ट बन रहा है. The line segment that divides the circle into two parts is called, अब ये ए बी जो लाइन सेगमेंट होगा, this line segment is called chord of the circle. Chord of the circle. ऐसा नहीं है कि सर्कल में सिर्फ एक ही chord हो सकता है. अगर मैं यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, let it be DE. Again, this line segment divides the circle into two parts, this one and this one. So like this we can draw a number of chords. We can say infinitely many chords can be drawn. Line segment that divides the circle into two parts is called chord. If this one is a chord, we can say chord of a circle divides it into two segments. If this one is a circle, this one is the arc. This one is also called arc. The region between chord of the circle and arc of the circle is called segment. So we can say chord of a circle divides it into two segments. दोनों में से जो बड़ा सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट थोड़ा बड़ा है, this one is called मेजर सेगमेंट, और जो सेगमेंट छोटा होगा, this one is called minor segment. What is segment of a circle? The region between arc of the circle and chord of the circle is called segment. ये जो region होगा हमारे पास, this region is called segment. Again, this region is also called segment of the circle. One is major segment, second one is minor segment. Then AB is a chord है. अगर मैं एक और chord ड्रॉ करता हूँ, this one is chord, this one is again chord of the circle, this one is again chord of the circle. तो हम देख रहे हैं ये chord थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है. If C is the center of the circle, then center of circle से जो line segment pass करता है, this one is called diameter. इसका मैं नाम रखूँगा DE. DE is diameter of the circle because it passes through the center of the circle. DE diameter भी है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि diameter of the circle also divides it into two parts, मतलब diameter chord की property भी satisfy कर रहा है, तो we can say diameter is also a chord of the circle and diameter is the longest chord of the circle. Circle में जितने भी chords होते हैं उन सब से लंबा जो chord है, that is diameter of the circle. Diameter of a circle is the longest chord of the circle. तो यहाँ तक हमने concept कर लिया chord of the circle, segment of the circle, major segment and minor segment. Then next concept is sector. Sector. If this one is the center of circle, then distance between center and circle, this one is called radius of the circle. Again, distance between center and circle,
दिस वन इज अगेन रेडियस, वी कैन राइट इट आर। एक सर्कल के जितने भी रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, RAD एक सर्कल में जितने भी रेडियस ड्रॉ करोगे दे आर ऑल इक्वल। नाउ दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज arc. Distance between two radii, area between two radii of the circle and arc of the circle, this area is called sector of the circle. ये कॉन्सेप्ट भी हमें याद रखना है। हमने सेगमेंट पढ़ा, हमने सेक्टर पढ़ा। आफ्टर दैट अगर सर्कल को हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। Now another concept, we have a circle, let it be, then suppose O is the center of the circle, कोई भी नाम रख सकते हैं। This one is chord because AB divides the circle into two parts, this one is the chord। if this one is the chord, we can say this one is the segment, this one is segment। now this one is the same segment, मैं इस segment में एक एंगल ड्रॉ करता हूं, this angle is angle ACB। इसी segment में मैं एक और एंगल ड्रॉ करता हूं, this angle is ADB। ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हैं, so we can say these two angles are equal। the rule is angles in the same segment are always equal, angles in the same segment are always equal। ये concept use होगा आगे problems को solve करने के लिए। again we have a circle with center O। now we draw a line segment that joins the circle at two ends, this line segment is called diameter of the circle। now this one is diameter, it means this one is semicircle, this one is semicircle। we draw an angle in a semicircle, let it be angle ACB, this angle will be 90। the rule says angle in a semicircle is always the right angle, this angle is of 90 degree। one more concept, again we draw a circle with center O। now these are 2 points, suppose A and B, A to B, this one is called arc of the circle, arc। A to B, this one is also called arc of the circle, but the difference is this one is major arc, this one is minor arc। एक बड़ी आर्क है मेजर आर्क, एक छोटी आर्क है माइनर आर्क। then AB arc subtends an angle at the center of circle। एक एंड इसका A पे है, एक एंड B पे है, B से angle AOB is subtended at the center of the circle by the arc AB। AB arc ने center of circle पे एक एंगल सबटेंड किया, same arc subtends another angle at the circumference of the circle, let it be ACB। now what will be the relationship between these two angles? the concept says angle subtended by an arc at the center, angle subtended by an arc at the center, this one is angle AOB, this angle is always twice the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle। अगर सेम आर्क दो एंगल्स बना रही है, एक सेंटर ऑफ द सर्कल पे, एक एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सपोज दिस एंगल इज 120 डिग्री, then this angle will be half। we can say angle subtended by an arc at any point on the circumference of the circle is half of the angle subtended by the same arc at the center। ये एंगल इस एंगल से डबल है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल का हाफ है। अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा इट विल बी 120, अगर
ये 110 डिग्री होगा, इट विल बी हाफ 55 डिग्री। तो इसी टाइप के और बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू सर्कल, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।